Hello. Hello. Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. So today the topic is what? Vectors and 3D, correct? Is it? This is the last class of the review. Is it the last class, last topic, or you have more classes of maths? आज लास्ट है क्या क्लास मैथ्स में और भी टॉपिक है? चलो फाइन, ठीक है. So vectors, like primarily we use the tools. First is the dot product. Second is the cross product. Third is TP, that is character product. Fourth is the vector product. Fifth is the fundamental theorem of vector. Whose mic is on? Fundamental theorem of vector in a plane. Sixth is the fundamental theorem of vector in space. Correct? So these are the 6 tools primarily we use. Okay. So we need to learn the application of dot and cross. Let's say we talk about the cross product. What is the application of the cross product? If I have 2 vectors, what is the cross product? अभी हम नहीं लेंगे, हम क्लास ले रहे हैं. We have A and B. So cross product will be called क्या? अभी क्लास में जवाब रख दो. Cross product will be called क्या? A cross product. Correct? What is the application of this cross product? Anyone? Why do we use cross product in vector? In math, like how do we use cross product? क्रॉस प्रोडक्ट जो यूज करते हैं, क्या एप्लीकेशन होता है क्रॉस का? हाउ डू वी, व्हाई डू वी यूज क्रॉस इन, लाइक टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? एम आई राइट? इफ आई हैव अ ट्रायंगल, this is vector A, this is vector C, B, this is vector C. So this is, let's say, A. So area of triangle ABC can be called half mod A cross B or half mod B cross C or half mod C cross A. Am I right? Say yes or no. क्लियर है ये? बताओ. यस सर. Yes, sir. ठीक है. तो क्रॉस का मतलब ये होता है वेक्टर में एरिया का कैलकुलेशन. ठीक है, इसलिए क्रॉस को इन्वेंट किया गया. वेक्टर के क्रॉस को यूज करते हैं मैथ्स में. तो सबसे पहले देखो, जैसे प्राइमरी इसको यूज करना है,
Have you heard of sine rule in a triangle? What exactly is the sine rule in a triangle? If I have a triangle like this, ABC, what is the sine rule? Is it like this? Yes, sir. If I ask you to prove by using vector, how do we do this? Is equal to 2r. Is it the sine rule in a triangle? Where r is the circumradius of the triangle, correct? तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसके लिए ये वाले पार्ट के लिए, इन तीनों के लिए तो बहुत इजी है. अभी हमने प्रीवियस पेज पे किया इसको. जैसे वी टॉक अबाउट दीस थ्री पार्ट्स. तो उसके लिए we take vector A. This is vector B, and we apply the triangle rule of relation. What is the area of triangle ABC? Is it half mod A cross B? करेक्ट है. ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये दोनों को इफ यू टेक दीज टू, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? हाफ ऑफ विल बी कैंसिल. व्हाट डू वी गेट? वी गेट mod A mod B. इनके बीच का एंगल क्या है? mod A mod B के बीच का एंगल है sin pi minus c. ये है ना इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, करेक्ट? mod B mod C. So what is the angle between them? Mod B and mod C. What is the angle between them? That is A. Sin A. This gets cancelled. Are we getting A by sin A is equal to C by sin C? आ गया. Mod A is small a only, the side length. Have we got that? बोलो. Yes, sir. Similarly, we can equate second and third, and we can get the A by sin A equal to C by sin C equal to B by sin B. Correct? So this part is like everywhere the proof is given. Like we just equate the area by taking the different pair of vectors, and we get the required thing. Correct? How do we equate to 2r? Anyone? This 2r. How do we equate to 2r? By using vector. ठीक है, ये clear है? This part is clear to all? ठीक है, चलो अब 2r वाला मैं देखता हूँ. Can we go to the next page? 2r के लिए we draw a circle like this, and then we draw a triangle. Then we take the circumcenter at O. This is O. This is A. This is B. This is C. In this diagram, we consider O as an origin. इसका position vector A. इसका position vector C. और इसका position vector we take as in B. Correct? Clear? How much this angle will be? This angle, anyone? कितना angle होगा ये? O is the circumcenter. What is this angle then? And since O is the circumcenter, so we can say that mod A is equal to mod B is equal to mod C is equal to capital R. R is the circumradius of this given triangle. How much will be the angle BOC? Anyone? BOC का value क्या होगा? वहाँ circumference पे A है तो angle BOC will it be 2A? Twice of A? Yes, sir. This angle will be, if I'm not correct, if I'm not wrong, so this will be pi by 2 minus A. And this will be also pi by 2 minus A, correct? Now we talk about, let's see this carefully. We are talking about area of triangle OBC. We write down in two ways. Half mod B cross C. And what is this vector? This vector will become what? C minus B is equal to half B cross C minus B. All right. I've written down the area of the same triangle like in two ways. So both are the same. Correct है ये? बोलो expression सही है? Area of triangle OBC को दो तरीके से लिखा है. सही है ये? बोलो.
Is it understood? The area of triangle OPC, is it correct by writing down in both the ways? Yes, sir. Ab dekho, this and this will be cancelled. What is this? This part is mod B, mod C. What is the angle between vector B and vector C from the diagram? That is sine 2A. This is mod B, mod of C minus B. What is the angle? It's actually sine pi minus pi by 2 minus A, but sine with sine theta use karo ya pi minus theta use karo. Same ही होता है. And this. Correct. So this mod B gets cancelled. What is mod C? Is it capital R? From this sine 2A. What will be mod C minus B? That will be BC side length, that is small a as per the triangle, and this is cos A. So what is the data we got? A by sin is equal to R. आ गया देखो. Are we getting A by sin is equal to R? Is it clear? Yes, sir. So since we have got A by sin A is equal to R, we can have B by sin B or C by sin C, both equal to R. Clear? Any doubt in this? Anyone? No, sir. ठीक है. Cosine rule, how do we prove? The cosine rule of the triangle, how do we prove in this? Cosine rule होता है ना? What is the cosine rule in a triangle? This is the sine rule. If I talk about the cosine rule, so what is cos A? Cos A is B square plus. Is it? Is it called a cosine rule in a triangle? बोलो. Yes, sir. कैसे प्रूव करेंगे वेक्टर को यूज करके? देखो, ये हुआ वेक्टर ए, ये हुआ वेक्टर बी, और इसको मान लेते हैं वेक्टर सी. सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रायंगल वेक्टर एडिशन से ए प्लस बी हो जाएगा. सी इक्वल टू, बोलो करेक्ट है ना? फिर से सी को ए प्लस बी लिख देते हैं. We take dot of, we multiply first with second. What do you get? What is C dot C? Mod C square. This becomes what? Mod A square plus mod B square is 2 mod A mod B. 2A dot B. A और B के बीच में कितना एंगल है? That is cos of pi minus C. And here mod C is a small c square. What is the value of cos C? आ गया cos C का value. Like we had to get cos A. I got cos A. Doesn't matter. The same way we can get cos A also. Have you got it? Yes, sir. ठीक है. जब तक वेक्टर में ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स नहीं करोगे, वेक्टर में डॉट और क्रॉस का एप्लीकेशंस पूरी ज्योमेट्री में होता है, तो उससे पता ही नहीं चलेगा कि हाउ डू वी यूज डॉट एंड क्रॉस. करेक्ट? इज इट क्लियर? द कोसाइन रूल, एप्लीकेशन ऑफ कोसाइन रूल, लाइक द प्रूफ ऑफ कोसाइन रूल बाय यूजिंग वेक्टर. ठीक है, क्लियर है? बोलो, एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन इन दिस? Yes, sir. Clear. Okay. What is rhombus? What kind of like quadrilateral is called rhombus? What is the property of rhombus, by the way? Like what exactly happens in the rhombus? Rhombus, the diagonals intersect at what angle? This angle. 90 degrees. So by using vector, we have to prove that they're intersecting at 90 degrees. How do we prove that? The question is, A dot B is equals to Sir, 0. dot product 0. हाँ, डॉट प्रोडक्ट 0. वेरी गुड. तो उससे हो जाएगा, जैसे इसको we take ऐसे क्वेश्चंस के लिए we'll take O, this vector A,
This is vector B. So automatically this will become what? A plus B. From the vector rule of addition, correct? Vector OC. So, so in the rhombus, we have to prove that what? That diagonals intersect at what? 90 degree. So basically, we have to prove that vector OC dot vector AB is equal to 0. What is OC? OC is A plus B, and AB vector will become what? What will be AB vector? AB vector will be what? X plus A is equal to B. That will be B minus A. Is equal to, so we have to prove that this is equal to 0. So this is LHS. If I take the dot, what do we get? We get A square plus B square. Not A square plus B square. We get A square minus A square plus B square. And since it's the this thing, what do you call it? Rhombus, so we already know mod A is equal to mod B. So it means A is equal to B. So what is this? 0 ho gaya. That is equal to RHS, correct? Can we say that? Yes, sir. Yes. Is it clear? Yes, sir. ठीक है. अच्छा एक और थ्योरम देखो. Can we go to the next page now? These two angles are equal. So this is the angle bisector theorem. So BD by BC कितना होता है? AB by AC होता है triangle में. बोलो. Is it the angle bisector theorem? If AD is the angle bisector, is it correct? Yes. So by using vector, we have to prove this. How will we prove it? What is the equation of line in a vector if it's passing through this? Like if it's passes through point A and it's along the vector B, what is the equation of line? Is it R equal to A plus lambda B? पता है ये? Equation of line which passes through a fixed point A and have direction along B. Is it clear to all? ये तो पता होगा ना theorem? Yes, sir. Okay. And what is the direction of the vectors? If I talk about two vectors, let's say this is A, this is B. So what is the direction of this bisector? Which bisects the angle with? What is the direction of this vector? Along A cap plus B cap. ये पता है डायरेक्शन होता है वेक्टर्स का जो बाइसेक्टर होता है A cap plus B cap के along? Yeah. Clear? Is it clear? पता है या shall I prove this thing? A cap plus B cap बोलो. No. नहीं पता है. Not clear to everyone. Say yes or no. Not clear to everyone. Sir, clear. ठीक है, ये तो करा होगा क्लास में. ठीक है, तो चलो ये फैक्ट हमको प्रूव करना है. तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा वी टेक द A as in origin. These are the two vectors. What will be the equation of line AD? It's passing through A, which is origin lambda times it will be B cap plus C cap. Is it? Equation of line AD correct लिखा मैंने बोलो. And what will be the equation of BC? Equation will be BC will be R equal to C plus lambda times C minus B. Correct? Is it clear both the lines?
दोनों लाइन का इक्वेशन क्लियर है? बोलो। Yes, sir. So if I solve equation number 1 and 2, we get the position vector point D. So we are trying to solve equation 1 and 2. So for that, this is what? This is lambda times B cap is B by or B. नहीं, this is lambda, इसको mu कर दो, दोनों में same variable use कर दिया। यहाँ पे lambda है, इसको mu लेते हैं, और ये हो जाएगा minus, we equate the coefficient of C with C and mu with V. By equating the coefficient of C, we get mu by mod C is equal to 1 plus lambda, and with by equating the coefficient of that B, we get mu by mod B is equal to minus lambda. So इसमें place करने से what is the value of mu we'll get? I think by placing this mu by mod C आ रहा है, तो we get mu by mod C is equal to 1 minus mu by mod B. What is mu? Is it? Are we getting this? Yes, What? sir. तो इसमें प्लेस कर दो इस वाले इक्वेशन में mu का वैल्यू किस वाले में? So now what is the position vector R coming as in? R coming as in? What is that? ये मैंने सही किया, mod B into mod C by B plus C. हाँ, उसमें mod B भी तो लगा हुआ है। हाँ, ठीक है, वो हो जाएगा mod C by mod B plus mod C B cap plus mod B by mod B plus mod C into C cap. So you can clearly see that this point is getting divided into what ratio? Mod C is to mod B. Section formula से हो रहा है ना? Are we getting BD by DC is equal to AB by AC? Is it the section formula? It's getting divided into mod B is to mod C ratio. The point D. So we got the proof. Am I right? अरे mod B is to mod C का section लगाओगे तभी तो होगा ना, M is to N से MC plus NB by M plus N. So it's getting divided into mod C is to mod B. That's what we have to prove. Am I right? Hello? Yes, sir. So we got the proof by using that particular thing. ठीक है? So dot, why do we use dot and why do we use cross? Dot we use basically for what? Dot we use to get the projection and cross we use to get the area. These two are the tools. तो मैंने कुछ assignments vector का डाला है, तो just try to use, wait a minute, I'll just repost that chat. Just download this link, everyone. Can you see two assignments in this? One is vector, one is 3D. Yes, sir. Clear? Everyone? ठीक है, just exercise 1, just open up the vector assignment. Just open up the vector assignment. There are two assignments. One is vector, one is 3D. Just open up vector assignment. इसमें ये बताओ मेरे को तुम। In the vector assignment, all you do the question of 14, exercise 1. I'm talking about the exercise 1. How do you do the question of 14 in that?
Assignment is accessible to everyone. Anyone is having difficulty in getting assignment? I hope it should be like. Yes, sir, it is accessible. See the question number 14. That's a good question. How do you do it? I just wanted. इसमें वेक्टर सी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी लिख सकते हैं क्या? सबसे पहले तो सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है, तो इसमें आई थिंक इट्स वाइज टू टेक रादर देन टेकिंग ए बी सी विल टेक कैप्स बिकॉज़ डायरेक्शन विल नॉट मैटर्स. विल टेक ए कैप, बी कैप एंड सी कैप. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको सिर्फ डायरेक्शन का पता करना है. तो इज इट करेक्ट? सी कैप इज एक्स कैप प्लस वाई बी कैप. इज इट करेक्ट? लिख सकते हैं इसे. अरे तीनों एक कोप्लेनर है. सी बी एबीसी कोप्लेनर है ना, तो सी को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी लिख सकते हैं. बताओ, इज इट करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. Yes. एक काम करो, पहले तो एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए, तो विल टेक डॉट, लेट्स से वी टेक द डॉट विद ए. तो सी डॉट ए एलएचएस इफ आई एम टेकिंग डॉट विद ए कैप, सो दिस इज द इक्वेशन. व्हाट इज सी डॉट ए? सी डॉट ए, सी और ए के बीच में आएंगे cos 2 pi by 3. व्हाट इज cos 2 pi by 3 माइनस हाफ में एक्स प्लस बाई बी और ए कैप क्या हो गया? हाफ हो गया. फिर उसी तरह से बी के साथ ले लो, तो सी कैप डॉट बी कैप इज एक्स, ए कैप डॉट बी कैप प्लस वाई. और सी डॉट बी एक्स ए डॉट बी कैप इज. So have we got these two equations 1 and 2? आगे 1 और 2 इक्वेशन. इससे x और y का वैल्यू निकल जाएगा? बोलो, नहीं निकल जाएगा x और y का वैल्यू? करेक्ट. What is the value of x and y? बताओ. इससे तो x और y का वैल्यू निकाल के बताओ, तो we can express then C as a linear combination of A and B. Same question is done, I think.
What is the value of x and y in these two equations? By solving 1 and 2, what do we get? X and y. आया किसी का x और y? So x is -1 and y is 1. X is -1 and y is 1. Okay, fine. ठीक है. So what do we get then? C. C cap is minus A cap plus B cap. Am I right? Is it clear from this equation? ठीक है. So now we have to get the angle with D. We'll take the dot with D cap both the side. कितना है C DOC एंगल किसके बीच में बोला DOC के बीच में एंगल निकालने बोल रहा है this would be cos theta. What is the angle between A and D? They have given A and D angle alpha. That cap is the alpha. It denotes angle. This becomes minus cos alpha plus cos theta. Have we got the given? आ गया आंसर बोलो आ गया cos theta minus cos alpha. Have we got it? Yes, sir. ठीक है तो this is the application of the dot, correct? 23. Let's see the question number 23. Can we go to the next one? Is it clear to all? This one? Yes, sir. See the question number 23 of exercise 1. It's easy, should be like done. Straight question. What is the area of the triangle whose vertices are ABC? Anyone? How do we deal with this? If the position vectors are ABC, what is the area of the triangle ABC? Anyone? क्या होता है ABC के term में? Area of triangle ABC. What is the formula in vector for this? If position vectors are ABC, what is the area of this triangle ABC in terms of AB? Half into A cross B. Half into A cross B plus B cross. It's cyclic, is it? ये एरिया बोलो कोई भी दो साइड्स के along का वेक्टर का क्रॉस लोगे तो आ जाएगा ना. What do we do? We take the cross of these two. Half into what? Mod of B minus A cross C minus B. We are doing. What do we get? See this. क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आया? चलो नहीं कर हाँ नया उसको कैच करो
This is the area of the triangle. So how do we like use this concept in the question? We have to use the same concept in the question. Correct. So what is that? Is it clear? कैसे आया area? ये part clear हुआ? बोलो. Is it clear to all? How do we get this area? Hello. A cross B plus B cross C plus C cross A. Hello. Yes, sir. इसी को यूज करना है वहां पे. इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है. Sir, So, no, sir, कैसे it's not clear. That This is not okay. Fine. Okay. We take the two vectors along the sides now to get if this is vector x, this is vector y. What will be the area of the triangle ABC? Will it be half x cross y? yes, sir. What is x vector? And what is y vector? Correct? Yeah. If I'm taking, Yes, sir. Yes, sir. what do we get? B cross C. B cross B is 0 minus A cross C plus A cross B. इसमें what will happen? Change the sign. Are we getting this? Yes, sir. Understood. इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है. तो we had a this is cyclic quadrilateral, correct? This is A, this is B, this is C, this is D. This is vector A. Is it like this? Correct? To position vectors of that. So they're asking that this we have to prove equal to 0. So what exactly is this? This expression A cross B plus B cross D plus D cross A. Which triangle area it will be? Anyone? Which triangle area it will be? अरे किस एरिया किस ट्रायंगल का एरिया होगा ये मॉड वाला साइन A cross B plus B cross D. Will it be the area of triangle ABD? Yes, sir. और इसको डिवाइड किससे किया? इसी से देखते हैं इसको डिवाइड कैसे किया. इसको डिवाइड किया है B minus A mod of B minus A dot नहीं डॉट D minus A किया था. नॉट मॉड नहीं है सिर्फ डॉट है. What do you infer from this B minus A dot D minus A? से क्या पता चल रहा है? देखो इसको यदि ध्यान से देखोगे इस एक्सप्रेशन को तो ये क्या हो रहा है? A cross B plus B cross D plus B cross D by mod of B minus A. Let's say this angle is theta. Is it something like this? है ये. ये नीचे वाला टर्म ऐसा बन जाएगा ना. A dot B AB cos theta ही होता है ना? नहीं होता है. A dot B cos theta. अच्छा, since the upper part is the area of the triangle, so what twice of area of the triangle rather. So can I write down the upper part as in this? 2 into mod of minus A into mod of B minus A into sin theta by mod of B minus A. देखो ऐसे लिख सकते हैं. Can we write down like this? बताओ. It's basically 2 tan theta. This first expression is 2 tan theta. Am I right? If theta is that angle, बोलो. Is it clear or not clear? Not clear. नहीं सर, नहीं सर. नहीं समझ में आया. देखो इस सिर्फ इस ट्रायंगल पे फोकस करो. इस वाले ट्रायंगल पे
हाँ ठीक है, b माइनस ए और d माइनस ए, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ तुमको कि मानो कि ये दो वेक्टर है, ये है x है और ये y है, तो इसका एरिया कैसे लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट डाउन हाफ x cos y, लिखोगे x cos y इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल को। Yes, sir. तो ये क्या होगा? हाफ एक्स वाई साइन थीटा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा हाफ एक्स वाई साइन थीटा, करेक्ट। तो एक्स वाई साइन थीटा हो जाएगा हाफ, तो क्या है x? व्हाट इज x rather? x इज mod of b minus a into y is mod of b minus a into sin theta, है ऐसा? बताओ, है Yes, ऐसा? sir. करेक्ट है। तो ये जो ऊपर वाला है तीन, अभी तो मैंने फॉर्मूला बताया ना कि यदि तीनों का वर्टेक्स है तो ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है। न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, इज इट? यू डिड ना जस्ट दिस फॉर्मूला, करेक्ट? तीन वर्टेक्स है, ये करा ना अभी हमने कि तीनों का पोजीशन वेक्टर से तो ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो वो जो ऊपर वाला पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसको मैं इससे रिप्लेस कर रहा हूँ। किससे? ये कैन इंस्टेड ऑफ दिस न्यूमरेटर कैन वी राइट डाउन नाउ हाफ, हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, mod b minus a into mod d minus a into sin theta. Can we write down this numerator as this? बोलो, लिख सकते हैं ऐसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। Can we write down this? बोलो। Yes, sir. अच्छा, नीचे वाला डॉट है दोनों वेक्टर का, तो डॉट का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? into cos theta हो जाएगा, करेक्ट? Is it clear? अरे a dot b is mod b cos theta. Angle is theta. I have taken already. Correct? Yes, So sir. Yes. what exactly is this now? First term is tan theta, correct? And since it's a cyclic quadrilateral, this is pi minus theta. The second term is with respect to triangle BCD. Just have a look. The second term that is with respect to triangle BCD. Am I right? Everything is same. Just have a look. The second term in the expression. अरे वो ट्रायंगल BCD के रेफर में किया हुआ है ना, नहीं किया हुआ है सारा काम सेकंड वाले टर्म में, प्लस जो है 23rd का। Yes, sir. तो ये आया tan थीटा, तो ये वाला सेकंड टर्म क्या आएगा? व्हाट एग्जैक्टली विल गेट द सेकंड टर्म एज in the same way first term if I've got tan theta, second term we should get क्या? Tan of क्या? Pi minus theta. What do we get the answer? What do we get the answer? Sir, tan theta minus tan theta. Yeah, that is 0. That's what we have to prove now. Yes, sir. Is it clear? ट्रायंगल बीसीडी में जब करेंगे वही चीज हो गया ना। देखो ट्रायंगल बीसीडी में अब हमारा जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसमें इसको मैं कितना है, हाँ b माइनस सी है, हाँ तो ये मान लेता हूँ। अब इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? हाफ मॉड x cos y। नहीं हो जाएगा ये, हाफ x विल बी into sine of pi minus theta, correct? So numerator will be replaced by this and denominator will become kya? Mod b minus c into mod b minus c into cos pi minus theta, correct? So this gets cancelled, ये half तो होगा नहीं। Are we getting tan pi minus theta? Is it clear? बोलो। Yes. So this is how we use, how do we find out the line size skew or not? That concept is clear. Two straight lines are skew or not? इसका कॉन्सेप्ट पता है कैसे पता करते हैं? What are the skew lines by the way? वैसे what are the लाइन को जैसे हम प्लेन के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का देखें कितना है वेक्टर, मतलब बोला ये क्या है? What is this vector? What kind of thing is this in the vector? R dot A is equal to, what kind of diagram is this? The R dot A equal to 1 vector में क्या represent करता है? Line, plane, what? What exactly it represents? ये दोनों क्या represent करेगा वेक्टर में? R dot A equal to 1 और R dot B equal to 1. What kind of figures it will represent in vector?
अरे r डॉट a r डॉट b इक्वल टू 1 जो है क्या मतलब r डॉट a इक्वल टू 1 की बात करो, क्या आएगा इससे? लाइन का इक्वेशन आएगा, प्लेन का इक्वेशन आएगा, क्या आएगा बोलो? So parallel vectors. Parallel vectors, my god. Vectors ये पता है, it's plane. How do we get the equation of plane in a vector? Let's say this is a plane. एक पॉइंट पता है हमको, इस प्लेन पे एक पॉइंट पता है a, और इस प्लेन के नॉर्मल हमको एक वेक्टर पता है कि ये वेक्टर जो है this is normal to the plane that is along n. तो कैसे लिखेंगे वेक्टर का इक्वेशन? तो इस प्लेन में हमको पॉइंट लेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर r है, तो r माइनस a का डॉट यदि मैं n के साथ ले लूं तो 0 आएगा। क्या बन जाएगा फॉर्म? a डॉट n will be some d. What exactly is this form? r dot n equal to d is what form? What kind of thing it represents? Is it a plane? Is it equation of plane? Hey, plane का equation where d is that a dot n. d will be scalar a dot n. ठीक है, होगा equation of plane? बोलो, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. And what is the n significance of n? What exactly is n? n will be a vector perpendicular to the given plane. होगा ये? करेक्ट है, गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा n, करेक्ट? Yes, sir. तो एक फॉर्म तुमने देखा होगा, दो प्लेन को यदि मैं मानूं ऐसे, we take two planes something like this, तो two non parallel planes will always intersect on what? line ना, यही कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना? नहीं होगा दोनों प्लेन का? दिख रहा है दोनों प्लेन का कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन? बोलो, करेक्ट? तो पहला प्लेन को हम एज्यूम करते हैं r डॉट a इक्वल टू 1, तो इसका मतलब a क्या होगा? व्हाट इज a? a will be perpendicular to this plane, a vector. Am I right? जहां समझ में नहीं आएगा बताना। ये आया समझ में? दो प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, a पहले प्लेन के परपेंडिकुलर है, मानो उसका इक्वेशन r डॉट a इक्वल टू 1. इज इट क्लियर फ्रॉम द डायग्राम? बोलो, Yes, sir. और ये वेक्टर क्या? अच्छा, एक और प्लेन जो सेकंड प्लेन है उसका इक्वेशन तो मैं मानता हूँ, एज्यूम करता हूँ r डॉट b इक्वल टू 1, करेक्ट? ये वेक्टर कैसे होगा? इसका डायरेक्शन किसके लॉन्ग होगा? विल इट बी लॉन्ग b? होगा b के लॉन्ग? बोलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. Now the purpose is to have that in दोनों plane का intersection. What is the, if a and b are not parallel vectors, so intersection of these two planes will be what? A straight line. Am I right? Intersection of these two planes will be a straight line. We have to get the equation of that straight line. So straight line का equation चाहिए, correct? क्लियर है? तो डायग्राम से ये बताओ, इस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन किसके लॉन्ग होगा? किसके लॉन्ग होगा स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन? इट विल बी अलोंग व्हिच? स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन किसके लॉन्ग होगा? बोलो, A cross B. ए क्रॉस बी. वेरी गुड. तो टू फिक्स अप ए स्ट्रेट लाइन हमको दो चीज पता होना चाहिए, एक तो उसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो पता चल गया कि वो ए क्रॉस बी के लॉन्ग है, और एक फिक्स पॉइंट से भी निकलता है ना, मान लो वो फिक्स पॉइंट बी है, तो हमको ये जिस फिक्स पॉइंट से निकलना है इस पी का पोजीशन वेक्टर चाहिए, ये तो पता चल गया हमको वो ए क्रॉस बी के लॉन्ग है, करेक्ट? इज इट क्लियर? तो हमको वो फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए. हाउ डू वी गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट फिक्स पॉइंट? It's clear what exactly we are doing. The algorithm is clear. We got the direction. Now we need one fixed point on the plane. ठीक है, correct है? बोलो. Yes, sir.
अब देखो इस चीज को ध्यान से, ध्यान देखना है, इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल चीज है। इज इट द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी? एंटी पैरेलल मैंने ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस ए और बी के प्लेन में इस लाइन पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ। कैन वी टेक द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑन दिस लाइन as an xa plus yb, r on this line in the form of xa plus yb? Is it like correct? But I'm using the fundamental theorem of the vector in a plane. One vector in the same plane can be represented as a linear combination of other two. From that, is it correct? R एक पॉइंट r उस लाइन पे एज्यूम कर रहे हैं जो a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन, वी कैन टेक दैट पॉइंट। एम आई राइट? बोलो, ले सकते हैं ये पॉइंट xa plus yb? Say yes or no. Can we take a point on the line as a linear combination of a and b? Yes, sir. तो हमको x और y का वैल्यू ही चाहिए ना? नहीं चाहिए x और y का वैल्यू? बोलो। Yes, sir, we need it. हाँ, तो we'll multiply with a, आ गया x mod a square plus y v dot a, r dot a is 1, so this will become 1. Then we'll take the dot with v. By solving these two equations, don't you think we'll get the value of x and y? r dot a तो 1 ही होगा ना? नहीं होगा, क्योंकि ये तो 1 है दिया हुआ। Can we get the value of x and y by solving this? Yes, sir, we can. So now this point can be represent xa plus yb, where x and y we know is lambda a cos b theta will be the equation of line which will be intersection of these two pairs. Correct? Is it clear? इसको note कर लो. You will not get this theory anywhere. Clear? Write down the steps clearly. If you haven't understood anything, let me know. I'll wait. I'll give you 3-4 minutes and just analyze the whole diagram. Done? Hello? Sir, almost, sir. Anyone has anything getting this? Just let me know. So could you explain why xa plus yb would be a point lying on No. R? Deliberately taking a point which is coplanar. I can take infinite points on the line. Deliberately, I'm taking a point which is coplanar with A and B. Can we take a point on the line which is coplanar with A and B? There are infinite points on the line, but deliberately, I'm taking this point only, which is coplanar with A and B. So that can be represented, that point position vector, as an xa plus yb ना. ये होता है ना कि A और B है, उसी में किसी को A और B का कॉम्बिनेशन लिखना है, तो इस वेक्टर को कैसे लिखते हैं? xa plus yb नहीं लिखते हैं? Yes, sir. But then हाँ, बोलो से. equated it, like how can you exactly just equate it to R? That's what I didn't really understand. We'll get somewhere origin na, for the A and B, the vectors can be parallelly transferred. So A and B
जहाँ कहीं पे किसी पॉइंट पे तो ऑरिजिन पे कहीं से ए और बी ड्रॉप किया होगा ना प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है, तो कहीं पे ऑरिजिन होगा ना। ए एंड बी vectors perpendicular to the given plane, they are intersecting at origin. We can assume now we can draw parallel vectors can be drawn in this space. So from origin we have drawn A and B to the plane, and from the Okay, got it. Yes, sir. same origin we have drawn a vector on the line which is coplanar. So Yes, sir, yes. it's convenient to calculate the position vector of that particular point which is coplanar with A and B. If I'll take any other point, we don't have the information for that. Is it clear? अभी मैं 3D में करके दिखाता हूँ तो थोड़ा और आसान है 3D में करना, बट ये देखना। You got it? Yes, sir. ठीक है, can I flip the slide, everyone? Can I change the slide? We are noting now. करूँ change? बोलो। Yes, sir, done. Yes, sir. अब इसी को 3D में देखो, तो 3D में दिखता है एक्चुअली, बट वेक्टर में थोड़ा जैसे what is this in 3D? X plus y plus z equal to 1. This is clearly a equation of plane. Am I right? ये तो पता होगा ना 3D में प्लेन का इक्वेशन होता है 3 वेरिएबल्स में, पता है ये? बताओ, ये shall I explain? ax plus by plus cz equal to d represents equation of plane in 3D. Is it clear to all, or shall I explain how do we get this? Yes, sir, clear. क्लियर है सभी को? बोलो। ठीक है, तो ये एक प्लेन है, ठीक है। और दूसरा प्लेन जो है मैं लेता हूँ ऐसे, मानो कि we take 2x plus, क्लियरली दो प्लेन है, नॉन पैरेलल प्लेन है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा? एक लाइन पे ही होगा ना? नहीं होगा? करेक्ट, इन दोनों का इंटरसेक्शन एक लाइन पे होगा, करेक्ट। तो हमको उस इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, हम 3D यूज करेंगे। तो ये चीज पता होता है कि जब हम ऐसे लिखते हैं ax we get a vector perpendicular to the plane. Is it clear? ai plus bj plus ck is perpendicular to this plane. ये क्लियर है? ये वेक्टर परपेंडिकुलर होता है इस प्लेन के, क्लियर है? बोलो। नहीं क्लियर है? अभी तो किया ना r डॉट n इक्वल टू d। Yes, sir. तो प्लेन क्या आया था लास्ट पेज पे, याद है क्या आया था? r को मैं लिखूंगा xi और n को लिख लूंगा ai प्लस bj प्लस ck। वही तो आता है ना, उस फॉर्म में नहीं आता है? आता है, इसका डॉट लेंगे तो ये दिख रहा है कि ये जो कोएफिशिएंट्स होता है ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। क्लियर? n was a vector perpendicular to the given plane. Is it clear to all? बोलो। Yes, sir. तो इसका मतलब ये जो लाइन है, जो लाइन कॉमन है इन दोनों का, ये जो दोनों लाइन कॉमन है इन दोनों का, इसका डायरेक्शन किसके परपेंडिकुलर होगा? इन दोनों का एक वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आ रहा है i plus j plus k और इसके परपेंडिकुलर है 2i. We will take cross of these two. If I'll take cross of these two, what do we get? Are we getting this? What is I vector? It's I only. J is minus j is what? Minus j is 4 into 2, 2j. And plus k, cross लेने इन दोनों का, k will be. Is it like, will it be the direction of the line? जो r use करते हैं हम लोग, उसमें लैम्डा किसके लॉन्ग होगा? इस लाइन का। ये क्लियर है? स्टेप बोलो। a क्रॉस b के लॉन्ग ही होता है ना लाइन का डायरेक्शन, बोलो। ये क्लियर है सभी को? बताओ। इज इट Yes, क्लियर? sir. अब रह गया क्या कि दोनों प्लेन पे कॉमन पॉइंट फाइंड आउट करना। कैन आई रब दिस पार्ट? डायरेक्शन इज क्लियर, वी गॉट द डायरेक्शन ऑफ द लाइन सिंपली बाय डूइंग दिस इज नथिंग, दिस इज r डॉट a इक्वल टू 1 ओनली, जहाँ पे a जो है i plus j plus k है, एंड दिस इज r डॉट b इक्वल टू 1, जहाँ पे b 2i plus 3j plus 4k है। वेक्टर फॉर्म में देखोगे, ठीक है?
Yes, sir. तो एक मिनट रुको, इसका आर कितना आया था, डायरेक्शन को पता चल गया ना, लैम्डा उसका आई माइनस आई थिंक प्लस के था, ठीक है। तो डायरेक्शन भी याद, तो अब हमको फिक्स पॉइंट चाहिए, तो फिक्स पॉइंट के लिए कार्टेशियन में बहुत आसान है, दोनों इक्वेशन को देखो। तो हमको ऐसा एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए जो दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करे, दोनों लीनियर सिस्टम को। तो एक काम करो, z को एलिमिनेट कर दो, तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, सेकंड को मल्टीप्लाई करो 1 से, सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों। व्हाट डू वी गेट? आर वी गेटिंग 2x plus 5 equal to 3? वी आर डूइंग 1 minus 2 आफ्टर मल्टीप्लाइंग, ठीक है। कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लो, वी टेक y1 x1, यहाँ पे x को 1 y को 1 पुट करेंगे तो z विल बी -1। देखो ये जो सेट है दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, बस चेक आउट, इज इट सेटिस्फाइंग बोथ द प्लेन 1, 1, -1? इज सेटिस्फाइंग बोथ द प्लेन? Yes, sir. तो इसका मतलब जो लाइन पास करेगा इससे पास करेगा, i प्लस j माइनस के, आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। यही कॉमन पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे कॉमन, दोनों प्लेन पे कॉमन पॉइंट का मतलब वो पॉइंट लाइन पे। अभी गॉट इट? Yes, sir. Is it the equation of line which is intersection of these two planes? बोलो, है equation of line intersection of these two planes? बताओ बताओ। Any difficulty in this? Anyone? No, sir. Understood. ठीक है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म से वो वेक्टर फॉर्म से वो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं इसका आइडिया कैसे लिया जाता है। अच्छा देखो, इसी का एक एक्सटेंशन में ले रहा हूँ, और ट्राई दिस क्वेश्चन, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन, फाइंड द perpendicular distance of a line from origin which is in the form of ये इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन यदि इस फॉर्म में दिया हुआ, इसका क्या मतलब है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है वो लोग बताओ, व्हाट एग्जैक्टली दे वांटेड टू शो। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स का फॉर्म दिया हुआ है और एक लाइन आएगा, फिर ए एंड बी आर नॉट पैरेलल वेक्टर्स, तो उस लाइन का ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन इज क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर? Yes. तो जो लाइन हमने निकाला था उसका ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, करेक्ट? ट्राई करो, एंड इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है, डायरेक्टली वी कैन यूज इन द क्वेश्चन, ठीक है। अभी नहीं जाना है क्लास में।
क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल? तो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर डायग्राम तुम लोग देखो, देन फ्रॉम द डायग्राम इट विल बी क्लियर. दिस इज वन ऑफ द प्लेन, this is the another plane, correct? And then what we are doing, we had an origin here. ये पॉइंट है origin, इससे मैंने 3 लाइंस ड्रॉ किए ऐसे. तो ये है, this is along vector A, this is along vector B, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ R is XA plus YB. The R होगा foot of perpendicular from the origin on the line. Can I assume that? Yes, sir. तो बेसिकली तुमको क्या assume करना है? mod R निकालना है ना? नहीं निकालना है. जो R तुमने ये R और ये इस R में confuse मत होना. This R is a position vector. So I am using RA equal to XA plus YB, which is the foot of perpendicular from the origin on the line. So basically we have to calculate mod R, mod of XA plus YB. Is it clear to all? That will be the perpendicular distance of that particular line from origin. And what is the direction of this line, by the way? ये line किसके along है? Is it along A cross B? A cross B, sir. Correct? Clear है ये सभी को बताओ. What I have written down, is it correct? Yes, sir. This is what mod R we are looking for. Correct? बोलो. ठीक है? Yes, sir. अब देखो, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पता है इसका वैल्यू कितना होता है? A cross B cross C का. Anyone? What is the value of this? So, A B dot C minus B minus dot B into vector C, is it? दो फॉर्म होता है इसका. ये सब पता होना चाहिए यार 10th क्लास में. करेक्ट, वो द रिजल्ट्स बताओ. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट yes, का sir. करेक्ट है एवरीवन? Is it correct? You must have done in the class this thing. इसका डेरिवेशन किया होगा क्लास में, या ये रिजल्ट पक्का कहीं ना कहीं यूज किया होगा. बोलो. Yes, sir. We've done this in class. करेक्ट एवरीवन? ठीक है. अब चलो, तो इसी को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये R जो मैंने माना ना, इसको अब जहां भी मैं R मान रहा हूँ, R का मतलब मेरा ये वेक्टर है. R का मतलब पोजीशन वेक्टर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो देखो, व्हाट इज R क्रॉस A क्रॉस B का वैल्यू फ्रॉम द, इज इट लाइक दिस? STP सही है ये रिजल्ट? बोलो. Yes, sir. व्हाट इज R डॉट B? सारा R इस R को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि दोनों प्लेन पे लाई करेगा ना. तो व्हाट इज R डॉट B एंड R डॉट B? तो RHS will become A minus B, correct? RHS will become क्या? A minus B, correct? Because since R dot B is 1 and R dot A is 1, correct? Yes, sir. अच्छा, LHS में देखो, ये जो है, ये R को लिखता हूँ मैं mod R mod A cross B. What is the angle between R and A cross B? What is the angle between these two vectors? Sir, 90 degrees. So will it be sin pi by 2? That will be 1. Yes, sir. No, and into n cap. So we are taking mod both the side actually. तो यदि मैं दोनों साइड mod ले लूँ, RHS में भी mod A cross minus A cross B. Will it be the value on the LHS side? अरे mod Yes, A cross. What is mod R then? Mod of A minus B upon what? Mod of what? A cross B. Is it the standard result for this? आ गया result बताओ. Yes, sir. This is the distance of this line from the origin, correct? And that is mod R. We like already made it clear mod R का value चाहिए, वो मैंने निकाल के दिखा दिया, correct? X और Y calculate करने की जरूरत नहीं है. Directly by using vector triple product, one go away everything. Note down this. ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, मेंस में भी आ सकता है, एडवांस में भी. ये रिजल्ट यूज होता है डायरेक्टली. इफ आई नो द रिजल्ट, वी कैन डायरेक्टली टॉक अबाउट द
perpendicular distance of that particular line from the origin from this result. Is it clear? Clear है बोलो. Yes, sir. Clear, sir. किसी को कुछ भी दिक्कत है तो मतलब don't hesitate, you can ask bluntly. Okay, I'll explain if you're not getting anything, because मेरे को लगता है वेक्टर्स को ज्यादा ज्योमेट्री में यूज नहीं करा है तुम लोगों ने, मतलब यू डोंट नो द ज्योमेट्रिकल थिंग ऑफ द ज्योमेट्री. है वही डॉट क्रॉस, बट उसको यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन में, दैट इज व्हाट मैटर्स इन द क्वेश्चन. Sir, हाँ बोलो. sir, I didn't get why R would be the perpendicular distance. How is it ensured that it's perpendicular? We are dropping from O to the line, the perpendicular, na, and A and B. Let's say you are sitting somewhere, like in the room, your two walls are intersecting on a line. Just see that. Wherever you are sitting, two perpendicular walls are intersecting on a line, correct? Yes, sir. So let's say where you are sitting is the origin. You drop a line, you drop a perpendicular from that point to origin, to that line. So that particular thing we are considering as in R. And A and B, we can parallelly shift to that point now. Yes, sir, got it. Vector can be transferred parallelly anywhere in the space. Am I right? Same direction में, correct? Yes, So sir. wherever you are sitting, you drop a line perpendicular to that two intersection of two walls on the line. तो जैसे ऐसे देखो ना, ऐसे दो walls है ना जहाँ पे तुम जैसे wherever you are sitting, you guys are sitting, two walls are intersecting. तो कहीं भी let's say you are sitting here, तो यहाँ से मैं एक line ऐसे drop कर देता हूँ इसमें perpendicular. इसको मैं R मानता हूँ. यहाँ से इस पे A और B पैरेलली हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं? A और B तो कहीं भी स्पेस में ट्रांसफर किया जा सकता है ना. तो this R will be always a linear combination of A and B, correct? Is that clear? Yes, sir. And moreover, let's say you don't need A and B. A and B को मारो गोली, ठीक है? A and B का जरूरत नहीं है यहाँ पे. ये जो R मैंने assume किया, इस लाइन पे जो मैंने perpendicular ड्रॉप किया, वो R और ये चूंकि ये R और ये लाइन का डायरेक्शन किसके लॉन्ग है? ये तो हमेशा perpendicular ही होगा ना. This angle will be always 90 degree. Am I right? This angle will be always 90 degree now, because this is vector A, this is vector B. So direction of line is along A cross B. Correct? So if I'm dropping a line from origin on that line, so obviously these two vectors will be always perpendicular. Am I right? Yes, sir. Angle between R and A cross B, wherever you take in this space, will be always pi by 2. Am I right? Hello, correct है? Yes, sir, got it. ठीक है. तो अभी चले आगे. क्लियर है ये? All aspect in this question is clear. Can we go ahead? Yes, sir. अच्छा ये बताओ तुम लोग ये कैसे चेक करते हो लाइन से स्क्यू है या नहीं है? इसका तो करा होगा ना कॉन्सेप्ट. यदि स्क्यू है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, करेक्ट? तो कैसे करते हैं उसको? जैसे एक्सरसाइज 1, कैन यू सी एक्सरसाइज 1? एक्सरसाइज 1 दिख रहा है ना जो अभी असाइनमेंट दिया उसका? जस्ट हैव अ लुक. क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 2. देयर आर टू लाइंस गिवन. You just tell me whether the lines are skew or not. What are exactly are the skew lines? Anyone? What exactly are the skew lines? Skew lines क्या होता है स्पेस में? किसको बोलते हैं skew lines? बताओ तो. What exactly is the skew line? बोलो. So lines that don't intersect and are in different directions. हाँ, correct.
It should not intersect. Non-parallel lines, जैसे 2D में non-parallel lines हमेशा intersect करता है, but 3D में not necessary. Non-parallel lines may intersect or may not intersect. So 3D में the non-parallel lines which are not intersecting will be called क्या? Correct? तो इसका पहले थियरी देखो, पता नहीं तुम्हें क्या है या नहीं. I'll do it. जैसे we take two lines. तो इस लाइन, ये लाइन पास कर रहा है पॉइंट ए से और ये लाइन पास कर रहा है पॉइंट बी से. ये है along the vector C और ये है along vector D. What is the equation of this first line? Will it be A plus lambda times C? What is the have I written on like correct लिखा है मैंने ये दोनों लाइन पे क्वेश्चन? बोलो सही लिखा है, बोलो. Is it correct, the equation of lines what I have written down? Yes, sir. तो हमको पता करना है कि ये लाइंस को यदि एक प्लेन में हुआ लाइन, if the lines are falling in the same plane, it will be. तो देखो इसमें एक फिक्स फैक्टर है. What is the fixed factor of this? Is it a fixed factor, this one? Is it a fixed factor? What is this vector? B Sir, minus must be B minus A. So if I take B minus A का dot with C cross D, if it comes 0, that means they are falling on the same plane, correct? It means coplanar. B minus A, C cross D will be, if they are falling on the same plane, C cross D will be perpendicular to the given plane. Am I right? होगा ना? Let's say Yes. if they are the same line, C cross D will be perpendicular to the given plane, and B minus A is a vector in the given plane. तो इसका इनका डॉट क्या आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए. इस सेम प्लेन में है तो नहीं आना चाहिए 0, बोलो. और इनको इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि STP of B minus A vector C vector D should be equal to 0. Correct? इसका STP यदि 0 है तो lines are coplanar, they'll intersect. If STP is non-zero, it means lines are not coplanar. Can I say that, everyone? yes, sir. Clear है, बोलो. Is it clear? Yes, So sir. Clear. I'm applying this on the fourth part, question number 2. So can I change this slide? Everyone is clear with this? Yes, sir. Everyone is clear with this theory, bolo. What I have done is clear to everyone? Clear, sir. Yes, sir. देखो अब फोर्थ का सेकंड में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. फोर्थ का सेकंड में मैं एग्जांपल, which two lines, exercise 1 4 second, just see that which two lines are given. First line is, let's say r equal to, it means it's passing through I minus 3j plus 4k, and it's along what? Second line is passing through vector B, that is and it's along what? ऐसे. Correct? Is it clear with the diagram? अरे ठीक है ना, दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ है फोर्थ का सेकंड एग्जांपल में, बोलो करेक्ट है ये दोनों इक्वेशन? What is the Yes, fixed? sir. What is the fixed factor then? Oh, sorry. Is it the fixed factor? कितना ये fixed factor बताओ? So I cap plus 7 J cap plus 10 K cap.
और प्लस 2k कैप। Sorry, 2k cap. तो इसका क्या मतलब हुआ, I प्लस 7j प्लस 2k कैप का, मानो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, इसका डॉट A क्रॉस B के साथ क्या होना चाहिए? We'll check out if it comes zero, it means इसका मतलब we are probably talking about the STP. What is the STP of three vectors? I'll just draw. तो कितना है ये वाला component? This is 1 7 2. That is 1 minus 1 1. And this is 2 1 3. Calculate this det. Is it coming zero or non-zero? This det value. यही होगा ना determinant इन तीनों का? नहीं होगा. STP का मतलब det ही होता है ना तीनों वेक्टर का. Correct? Yes, sir. Just calculate this det value. Is it coming zero or non-zero? Sir, it's coming non-zero. हाँ तो it means what? The line says skew. पक्का non-zero आ रहा है क्या? शायद वो आता है, एक मिनट इसमें check. 1 minus 1 minus 3 minus 1 minus 7 into 3 minus 2 plus 2 into 1 plus 2. What exactly we get? We get minus 4 minus 7 and plus 9. Yeah, it's coming non-zero. Correct. ठीक है. It's coming non-zero. It means So, line. हाँ बोलो. the position vector of A, Hmm. in the question it is given as I minus j plus 3 cap. Okay, yeah. तो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने. Correct. I minus j. सही सही सही. एक मिनट. अब देखो तो STP मैंने गड़बड़ किया ना. I minus j है ना. फिर तो ये भी चेंज होगा ना. This will change ना, this vector. What exactly is this now? This fixed vector is I plus 5j plus 2k. So now So if I 3k it is. So A Which is- vector is I cap minus j cap plus 3k cap. k cap, yeah, this is completely wrong. Everything just so this is 3k cap. Okay. So what exactly is now? I Plus 5 plus 3. okay, yeah, this would be 3k. Now it's correct. So now if I take the STP, what exactly is this term? वही मेरे को याद था कि इसमें 0 आता है. So if now if I take the STP, what exactly is the STP? This is 1 minus 1 3 1 5 3 and 2 1 3. Is it? So we get y 15 minus 3 plus 1 3 minus 6 and plus 3 2 minus 5. I think it's coming 0. Am I right? Is it coming 0? आ रहा है 0? अरे 0 है ना STP? नहीं है. Hello. Hello. It's coming 0 now. It's coming 0. So it means what? These lines are skew. Correct? बोलो तो. Can I say Yes, that sir. lines are skew? Lines skew हुआ इसका मतलब इनके बीच का shortest they are intersecting line. So shortest distance between these two lines will be what? 0. Can I say that? Shortest distance is also equal to 0. Am I right? Yes, sir. So they're not skew. They are skew, no? If they're intersecting, how can they be skew? No. Sorry, they are not skew. Lines are not skew. Yeah, sorry. Lines are not skew. Is the correct statement. They are falling on the same plane. That's why they are not skew. Shortest distance will be 0. Am I right? Clear? Can you check for the third one whether they are skew or not? The third part, fourth, third.
इसी कॉन्सेप्ट पे चेक करके बताओ. Fourth, third part. You're doing. Stipulating what do we get this stipulation 1, 3, 2, I think it's coming not equal to 0. Am I right? Hey, are not equal to 0? Correct? Is it clear? Clear है ये बोलो. Okay, this is -1. I've written on. तो ये -1 है. अब हो जाएगा सर 0 आ जाएगा. 4 minus j plus k. नहीं ये क्या किया मैंने फिर से गड़बड़ किया यहाँ पे. 4 है minus j plus k है. This is plus k. I plus 3j plus 4k. I plus k 2i plus 3j. Okay, हाँ ठीक है. Now we need to write on this once more. So these two are correct. 1 3 minus 1 1 3 4. Third row will change. Third row will become what? Minus 1 and 3. 1 is 9 plus 4. So 4 minus 1, 1 in the third Minus- row. Third row is minus 1. Correct. So then it's coming 0 or not? Just say that. By solving this, what exactly we are getting? 1 के साथ कितना आ रहा है? 3 plus 4. And that is minus 3 into 1 minus 16 plus 1 minus 1 and minus 12 minus 13. And this becomes, it's coming, I think, non-zero. Am I right?
Non-zero are right? Which means lines are skew in this. Can I say that? No, it's correct. How do we get the shortest distance between skew lines, two skew lines? Shortest distance between, if the line, once we check the line is like skew or not, once we get the line is skew, then shortest distance will come as in what? Between two skew lines we're talking about. We have this. This is A, this is point. This is along vector C, and this is along vector D. First line is R equal to and let's say STP of B minus A. Vector C, vector D is not coming in. It means line size Q. Can I say that? It's given that. Clear? So line size Q. So how do we get the shortest distance now? बोलो कैसे आएगा shortest distance? अभी इस केस में anyone? ये करा होगा क्लास में पक्का. This must have done it. ये किया है ना ये क्लास में पक्का किया होगा बोलो. इसमें क्या करते हैं हम लोग? Just have a look. एक fixed vector. What is the fixed vector available in this whole diagram? Which is the only fixed vector we can have? Is it the only fixed vector we can have? Bolo. What is this fixed vector? B minus A. Correct? Say yes or no. ठीक है? Consider the form line perpendicular to both the line. Yeah, correct. That's the idea. Fine. So B minus A, we take the projection of B minus A along the line which is perpendicular to both the line. What would be the direction of both perpendicular to both the line? So this will be along what? C cross D. We have to calculate projection of what? Which vector? Projection of B minus A along which vector? Cross D. That would be the shortest distance. Let's say that is R. So that will be B minus A dot cross D by mod C cross D. Correct? होगा ये बोलो. Will it be the shortest distance between these two lines? Say yes or no. अरे आया समझ में बोलो तो कुछ तभी तो मेरे को पता चलेगा. Is it clear or not clear? Understood, sir. ठीक है लेकिन इसमें एक स्पेशल केस होता है जहाँ पे C क्रॉस D जो वो पैरेलल वेक्टर से हो जाता है तो उसको कैसे डील करते हैं. ठीक है तो वो बताओ मेरे को. आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. क्लियर? कैन आई चेंज द स्लाइड? दिस इज क्लियर? ठीक है अब देखो एक स्पेशल केस होता है जिसमें हमको निकालना है. जैसे देखो कि एक लाइन ऐसे है और दूसरा लाइन भी इसी टाइप से है. ये लाइन है मानो I प्लस जे से निकल रहा और ये वेक्टर है along I माइनस 2j प्लस 3k के बाद. दूसरा पॉइंट यहाँ पे है 2i माइनस 3j प्लस 4k और ये वेक्टर है along now how do we get the this line is r equal to I plus j plus lambda times what is the equation of this line?
क्या दिख रहा है इस दोनों लाइन में? What exactly? Are you able to figure out something like very peculiar to this particular case? बोलो, कुछ पता चल रहा है इसमें? कुछ एक particular चीज है. This is vector A and this is vector B. What is the speciality between A and B? बोलो. ये क्या है स्पेशल, मतलब क्या स्पेशल चीज है ए और बी के बीच? पैरेलल। पैरेलल है. तो अभी वो जो फॉर्मूला हमने करा था, ये लाइंस पैरेलल है स्पेस में. जो फॉर्मूला हमने करा था, क्या 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 फॉर्मूला? We had this formula ना. If I apply this formula here, जो हमने स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला निकाला, C क्रॉस D बाय मॉड C क्रॉस D, तो C और D तो यहाँ पैरेलल है, नहीं पैरेलल है, तो ये क्या आ जाएगा? मॉड C क्रॉस D करोगे तो 0 आ जाएगा नीचे, तो डिफाइन नहीं होगा ना. दिस इज स्पेशल केस ऑफ स्क्यू लाइन. देन हाउ डू वी डील विद दिस? बोलो, कैसे करेंगे डील? अब दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ स्क्यू लाइंस. दीस लाइंस आर स्क्यू, पैरेलल है बट अलग-अलग पॉइंट से निकल रहा है. Anyone has any idea on this? Sir, maybe join A and B and draw a perpendicular from B to the line. हाँ वही है, वही उसी टाइप का है. I'll just draw the diagram, then you guys will be able to figure out this. देखो ये है, this is passing through A and this is passing through B, and both are along vector C. Okay, so what is the first line? And this is it something like this? तो इसमें भी fixed vector कोई पकड़ो. Is it the fixed vector? और ये है distance. देखो, is it the distance? और is it the distance? बताओ. ठीक है, तो ये fixed vector क्या है? What is this fixed vector? तुमको ये D चाहिए. This D you are looking for. What is this fixed vector? B minus A. Correct? Clear? So if this angle is, let's say, हाँ, तुमको एंगल मानो कि ऐसे कर लो. वो डायग्राम को मैं उल्टा कर देता हूँ, फिर ज्यादा कन्वीनियंट होगा. Let's say this is the vector. This is along A minus B, and this angle is theta. So what do you want? D will be what? Vector D will be, can we write down that D distance is nothing but A minus B cross C vector by mod by mod C. Can we say that? याद आएगा mod of A minus B sin theta, which is the D distance. Is it clear from the diagram? बोलो. Clear है ये formula? बोलो. Will it be mod A minus B sin theta? Yes, sir. So this is the formula we apply when the vectors are parallel. The formula will change in this case. Am I right? Correct. This is the formula we need to apply in this special case. Fine. We'll get the distance. Or we'll get the distance between these skew lines in this special case. Is it clear? Yes, sir. ठीक है. ठीक है, चलो एक और aspect है vector का, that is the vector equation. How do we solve the vector equations like linear variables में जैसे हम लोग करते हैं? So how do we solve that vector equation? Calculating the perpendicular distance of a point from the plane, point from the line. These all things are clear. बोलो, हो जाती हैं ये सब चीजें. चलो first we'll do the vector equation, then I'll come back to that aspect. See this vector equation. How do we like? ठीक है, तो जैसे exercise 2, just go to exercise 2. Everyone, exercise 2. Exercise 2, question number 18A.
So it's like vector equation and we have to solve it. We have to get the value of this. This would be a wrong example. Just go to 24 first, then I'll go 18. Question number 24. Just have a look. Exercise 2, question number 24. Can you see the question? दिख रहा है 24 वाला क्वेश्चन बोलो. Is it visible? ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? देखो इसमें बोल रहा है ABC are the unit vectors and this equation is given. What is the equation given? Equation is A cross B plus B cross C equal to A times A plus. They're asking you to get the value of PQC. How will we do it? It's like equation, linear equations जो होता है तो उसको vector equations में solve करते हैं. What should be the approach? बताओ. इक्वेशन विजिबल है सभी को? बताओ. दिख रहा है ये डेटा इसका 24th का एक्सरसाइज 2 का? Say yes or no. Yes, sir. How will we go ahead in this? What is the first thing is coming in your mind by looking at this? What operation we can do the first thing in this? What exactly? B common है दोनों में? किसके साथ डॉट लेना चाहिए दोनों साइड? बोलो. किसके साथ डॉट लेना चाहिए? B common है दोनों इक्वेशन में. What dot we can take both the side? We should take dot with A, B or C. What exactly we can do? We have 4 tools to solve the vector equation. I'll just categorize. One is the dot product. Everyone is familiar with that. Second is the cross product. इसका भी value पता है. Third one is STP, scalar triple product. Fourth one is vector triple product. Which tool we should use here? किसके साथ लेना चाहिए dot बताओ? Can we take dot with B? Why? Because B is common. So if I take dot with B, what is the value of this? Anyone? A cross B dot B. क्या होता है value? 0. 0. It will become 0. LHS will become 0. Very good. LHS तो 0 हो गया इससे. ठीक है. LHS is becoming 0. RHS is becoming PA dot B plus QB dot C plus RC dot A. What is the angle between A and B given? What is the angle given? Theta. So what do we get? No, sorry. B के साथ डॉट लिया तो सेकंड एक्सप्रेशन रॉन्ग है ना. QB dot B हो जाएगी. B is a unit vector. Is it correct? This equation, is it correct? Correct है equation given data से. बताओ. First equation. Clear? What is the next operation we can do on this? Anyone? अरे next operation क्या कर सकते हैं इस पे बोलो तो. Anyone, what is the next thing we can do on this? Batao. Have we got this equation? This is correct. Say something. No, how would I know whether you're getting or not? This is correct. This thing I've done correct. This equation, whatever I've written on, is it correct? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Now you can take dot with A and C also. हाँ तो चलो A के साथ लो. A के साथ डॉट लोगे तो first term is 0. Then you get BCA, STP of BCA. Correct? Huh? B cross C dot A is STP of BCA. Am I right? What is the RHS? P QB dot A will become Q cos theta. And this will become R cos theta. Equation 2 is correct? Correct equation 2? Yes, sir. Now we will take dot with C. C बच गया तो C के साथ dot लेंगे तो STP of ABC. Get P cos theta plus Q cos theta plus R.
These three equations we have got. So it's like now simple three equations, but only one problem is there. We don't know the value of STP of ABC. Is there any way out we can get the STP of ABC from the given data? STP of ABC का एक formula होता है, पता नहीं, I don't know whether you guys have done it. STP of ABC square is nothing but A dot A ठीक है, ये फॉर्मूला बोलो, ये फॉर्मूला देखा है STP of ABC स्क्वायर का? एनीवन? दो डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन से ये फॉर्मूला आता है. एनीवन हैज सीन इट? बोलो. Have you seen this formula of STP of ABC square? Just say yes or no. Otherwise, I'll explain. अरे बताओ तो. No, sir. No, sir. किसने पढ़ाया वेक्टर तुम लोगों को? Who has taught you vector in 3D? सर परिवेश सर ने पढ़ाया. ये फॉर्मूला यूज ही नहीं किया पूरे वेक्टर में कहीं पे. सीरियसली? देखो, जैसे A एक वेक्टर ऐसा है, A is this A1I plus A2J plus A3K. B is B1I plus B2J plus B3K. C is, हाँ तो इसका STP का फॉर्मूला बताओ. डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्या होता है इसका? STP ऑफ ABC तो पता होगा ना. What is the formula for this STP? ये ठीक है फॉर्मूला A1 A2. STP ऑफ ABC की बात करें तो करेक्ट है फॉर्मूला. ये तो करा होगा ना पक्का ये फॉर्मूला? Yes, sir. ठीक है, करेक्ट है ये. अब देखो ना, जस्ट हैव अ लुक. तो हम लोग बात किसके कर रहे हैं? अब देखो, दो डिटरमिनेंट मैं लेता हूँ. एक को लिखता हूँ A1 A2 A3. ये पता है ना, डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में चेंज करने से, सारे रो को सारे कॉलम में चेंज कर दे तो उसे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये तो पता होगा ना डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी. Yes, sir. ठीक है, तो RHS में क्या है? पहला भी STP ऑफ ABC ही है और दूसरा भी STP ऑफ ABC है, क्योंकि इन दोनों के डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम है. इसमें रो को कॉलम में चेंज कर दे. कैन वी राइट डाउन लाइक दिस एवरीवन? कैन वी राइट डाउन दिस एज एन STP ऑफ ABC इनटू STP ऑफ ABC? बोलो इसे कोई. Yes, sir. ठीक है, तो व्हाट इज दिस? STP ऑफ ABC स्क्वायर. ठीक है, आप डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं. देखो तो क्या होता है डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन में? पहले क्या होता है? This will be multiplied with this. Am I right? What do we get? ऐसा आएगा स्ट्रक्चर. देखो A1 B1 आएगा ऐसा. देखो तो फिर सेकेंड को करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 A1 B2. हाँ A2 B2 प्लस A3 B3. ये मैंने गलत लिखा. हाँ ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर. विल बी लाइक दिस. दिख रहा है स्ट्रक्चर मल्टीप्लिकेशन का? यहाँ पे आ जाएगा C1 स्क्वायर प्लस आ जाएगा. ये दोनों डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो विल वी गेट. हाँ, व्हाट इज दिस टर्म बाय द वे? Is it A dot A mod A square? What is this? A dot B. What is this? Dot C. ये B dot B A dot है, A. B dot B है, ये B dot C है, और ये क्या है? ऐसे आगे फॉर्मूला जो मैंने लिखा है बोलो. Yes, sir. करेक्ट है. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पता है कैसे वेक्टर में यूज किया. Is it clear to all? Anyone needs any explanation in this?
क्लियर है सभी को? कैन वी गो Yes, टू द sir. तो ये फॉर्मूला यदि मैं यूज करूं इसके लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो अब मेरे को बताओ इसमें सारा वैल्यू अवेलेबल है तुमको। ए डॉट ए क्या हो जाएगा? ए यूनिट वेक्टर है ना? Yes. ए डॉट ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये cos थीटा, ये cos थीटा नहीं हो जाएगा? तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा एसटीपी ऑफ एबीसी का वैल्यू। बोलो, विल वी गेट एसटीपी ऑफ एबीसी इस डिटरमिनेंट से? बताओ, अरे बोलो तो। Yes, sir. So now we'll place in this. Can we solve now these three equations? This will be also function of theta now. Solve करेंगे, we'll get the value of PQR. Am I right? Clear है? बोलो। ठीक है, तो this is the aspect of the vector equation. This is very important from JEE point of view. ठीक है, तो अब देखो एक और चीज, 25th देखो तो, 25th just write. It's the 25th is also vector equation. The unknown vector, they have given two equation, x plus c cross y is equal to vector A and y plus c cross x is equal to vector B. You have to get vector x and y in terms of A, B and C. A, B and C are known vectors, x and y are unknown vectors. Vector equation में x और y का टर्म जो होता है वो unknown vectors का होता है और ये उसका होता है. How do we do this? कैसे करेंगे इसको? तो इसमें क्या करते हैं, x को कैन यू प्लेस द वैल्यू ऑफ x, जैसे लीनियर सिस्टम में करते हैं, विल डू द सेम थिंग, y प्लस c क्रॉस x का वैल्यू क्या है, a माइनस c क्रॉस y,
Is it correct this step? सही है ये स्टेप, बताओ। एक कर दिया ना x को रिप्लेस पहले से, ठीक है। तो अब इसको if I take it further, this will become y plus c cross a cross vector b, तो इसमें लगा देते हैं माइनस, because this will become minus c dot y. Is it correct? बोलो। ये स्टेप्स सही है, बताओ। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसमें एक ही चीज जो ट्रबल कर रहा है वो है c डॉट y। तो c डॉट y के लिए देखो इक्वेशन नंबर 2 जो है, इसमें दोनों साइड c के साथ डॉट ले लो। c डॉट y सेकंड पार्ट 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू है b डॉट c, करेक्ट। सेकंड में दोनों साइड डॉट लेने से आर वी गेटिंग दिस। अरे ये रिलेशन बताओ, आर वी गेटिंग दिस दोनों साइड डॉट लेने से। अरे सेकेंड इक्वेशन में डॉट लेंगे तो पहला टर्म हो जाएगा c डॉट y, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा c डॉट c क्रॉस x। c जो रिपीट करता है तो ये टर्म तो 0 हो जाता है ना, नहीं हो जाता है। Yes, sir. हो गया इक्वेशन सॉल्व। अब देखो, अब यदि मैं इसको रिप्लेस कर दूं इससे तो कितना आ जाएगा, y c dot y is minus plus mod c square is equal to vector y is equal to b. What is vector y then? Vector y we got ना, आ जाएगा ना वेक्टर y कुछ इसको सॉल्व करके उस सारे को उधर भेज देंगे, b प्लस b डॉट c इंटू वेक्टर c माइनस c क्रॉस a बाय 1 प्लस मॉड c के स्क्वायर। इज इट वेक्टर y? आ गया वेक्टर y का वैल्यू, ये बताओ। आ गया वेक्टर y, बोलो एबीसी के टर्म में। बताओ, is it clear? Yes, sir. We similarly get the vector x also. Moreover, once we got y, we'll place the value of y in the first equation, we'll get the vector x. So this is one of the important aspects of the vector equation which we have to do it. 18th A, just have a look. Exercise 2, 18th A. How do you solve this vector equation? So exercise 2. एटीन्थ ए पार्ट, तो इसमें क्या क्या निकालना है मैं बता दूं। पी स्केलर है, एक्स वेक्टर है, प्लस एक्स क्रॉस ए इज इक्वल टू बी है। तो तुमको वेक्टर एक्स चाहिए किसके टर्म में, पी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के टर्म में, जो भी दिया हुआ एक्सप्रेशन है। तो दैट वेक्टर एक्स इज इक्वल टू दिस। क्लियर? इज इट क्लियर? यू हैव टू फाइंड आउट वेक्टर एक्स। In terms of P, A and B. So what is the first thing which is coming in your mind by looking at this question? क्या करना चाहिए इसमें, बोलो। कुछ ऐसे आइडिया आ रहा है दिमाग में, कैसे, हाउ डू वी इनिशिएट? हमारे पास 4 ही टूल्स हैं। कौन कौन से टूल्स हैं? Either I can use dot product, cross product, scalar triple product और vector product। क्या यूज करना चाहिए पहले बोलो। ये चारों टूल्स ये सॉल्व होगा। बोलो किसी चीज का आइडिया क्लिक कर रहा है क्या? Say anyone is finding out anything. What should we do? The first step. Anything we can find out from this equation? कुछ पता चल सकता है, x dot a, b dot a या a dot b, कुछ वैल्यू पता चल सकता है इससे, बोलो। अरे कुछ तो बोलो, दिमाग लगाओ ना कुछ अपने साइड से, कुछ पता चल सकता है इसमें, बोलो। किसी चीज का वैल्यू कैन वी फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन डेटा। a and b आर नोन वेक्टर, बोलो।
take dot of A on both sides, find x Very good. and We'll then find cross, then take cross. x dot a can be find out. We'll take dot on both this. A का dot लेते हैं. This will be what? The second term will be how much? इसका वैल्यू क्या होगा बोलो? 0 हो जाएगा ये x cross a dot a. Yes, sir. So we got b x dot a is equal to sorry b dot a is equal to b dot a. What is the x dot a value? Is it right? B dot a by p. X dot a available है x dot a available बताओ. Yes, sir. ठीक है अब क्या करें x dot a आ गया अब क्या करें आगे. Cross with A on both sides. हाँ we have the liberty of taking cross with a and b. Deliberately we'll take the cross with a because x dot a पता है b के साथ लेंगे तो हमको दोनों के साथ क्रॉस a के साथ लेते हैं दोनों साइड. x क्रॉस a हो गया. इससे दो फायदा होगा मैं बताता हूँ क्या क्या फायदा होगा. क्रॉस a इज इक्वल टू b क्रॉस a. एक तो फायदा ये होगा कि x क्रॉस a को जब भी चाहे हम x के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं x क्रॉस a का वैल्यू. इज इट b minus px from first equation this value करेक्ट है. रिप्लेस कर दिया x के टर्म में. अच्छा दूसरा टर्म क्या आ रहा है वो आ रहा है x डॉट a वेक्टर a माइनस a डॉट a into vector x is equal to b क्रॉस. करेक्ट. तो इसमें x डॉट a का भी वैल्यू पता है ना. नहीं पता है x डॉट a का वैल्यू कितना है. x डॉट a आ गया वेक्टर x. अभी गॉट वेक्टर x बोलो आ गया वेक्टर x का वैल्यू. x वाली टर्म को एक साथ ले आओ. वी गॉट द वेक्टर x. इज इट क्लियर? क्लियर है Yes, बोलो. sir. If we would have taken cross with b हेल्प नहीं करता. तो ये कैसे क्रॉस और डॉट लेना है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. हाउ डू वी लाइक मैनिपुलेट द डेटा. इज इट क्लियर? 18th ए अरे क्लियर है 18th ए बोलो. Yes, sir. b पार्ट कर सकते हो सॉल्व. सिर्फ मेरे को p सॉल्व करके b में लिखा. p is the unknown vector in second part 18b. You have to get the vector p in terms of a b and c. So how do we do? Just do the 18p part.
Shall I do it? करो मैं बोलो. Anyone has got it? This one. Hello. करो बताओ. रीडिंग डॉट ट्राई कर रहा है. ठीक है ठीक है. हाँ देखो we'll do it. What is that? P cross A is plus P dot B is equal to vector C equal to B cross C. ठीक है? तो ABC or not, then P हमको P vector चाहिए पहले. Basically we want the vector P. So what is that we can do over here? I think we can get the value of P dot B. इसका यदि मैं डॉट ले लूं A के साथ तो this will be 0. Are we getting this? What is the value of P dot B?
है ऐसे p डॉट b का वैल्यू करेक्ट है, बताओ। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब मेरे को चाहिए क्या चाहिए? हाँ, तो p डॉट b निकला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्रॉस कर देता हूँ b के साथ। हाँ, b के साथ क्रॉस, p डॉट b तो जब चाहो मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो मैं क्रॉस कर देता हूँ b के साथ दोनों साइड। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? पहला टर्म आ जाएगा p डॉट b तो वेक्टर a, करेक्ट है। तो देखो अब क्या हो गया, we got a dot b into vector p is equal to p dot b if you take common इसको तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ना p डॉट b को इस डेटा से। can't we replace it from this? नहीं कर सकते हैं रिप्लेस, बोलो। तो आ गया ना वेक्टर p का वैल्यू। RHS में सब कुछ abc का हो जाएगा और a डॉट b को भी ट्रांसफर कर देंगे। we got vector b, am I right? बोलो। we got vector p, is it? Yes, sir. तो this is how we solve the vector equation, ठीक है। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जेई में काफी क्वेश्चंस आए इस पे। गो कम डाउन टू एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 दिख रहा है सभी को? कैन यू सी द एक्सरसाइज 4? देखो जेई में क्वेश्चन आया है इस पे, आई विल जस्ट टेक अप द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इंस्ट्रूमेंट एक्सरसाइज 4 ये करना, एक्सरसाइज 4 में करेक्ट। तो 9th 11th सी क्वेश्चन नंबर 5th का डी पार्ट, दैट्स जेई 99, इट्स अ वेक्टर इक्वेशन। 5th D part. How do we solve this? तो बेसिकली 5th D में तुमको दिया हुआ ये इक्वेशन ओमेगा प्लस और W, sorry, you have to find out W in terms of U and V. Can you do this? अभी ऐसा इक्वेशन में करा है, W वेक्टर U और V के टर्म में पता करना है, U and V यूनिट वेक्टर से ये दिया हुआ। Can you find out this? बोलो। By looking at this equation निकलेगा, बोलो। क्या, what should be the first step in this? What exactly? Question is visible to all? 5th D part दिख रहा है सभी को? 5th D बोलो। Yes, sir. तो इसमें पहला क्या क्या देख के क्या पता चला? What is the obvious thing we can write down? Can we say that omega dot W cross. U is V dot U? बोल सकते हैं ये इस इक्वेशन को देख के we'll take Yes. dot, right? Can we say that? बोलो, करेक्ट है? Yes, sir, correct. अच्छा, किसके साथ क्रॉस लेना चाहिए, U के साथ या V के साथ? दोनों साइड। Since omega dot U is available, so I think logical is taking cross with U. So we'll have two advantages. One is we have the liberty of replacing omega cross U in terms of omega, and we have the value of, so I'll just do, we'll take the cross with U. Right. Will we take question like this? ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस बी का वैल्यू कितना है पहले से? बी माइनस डब्ल्यू। अच्छा, इसको मैं लिखता हूँ, तो दिस इज ओमेगा डॉट यू इनटू वेक्टर यू। यू डॉट यू इज 1 सिंस इट्स द इस वेक्टर में यू डॉट यू इज 1, मैंने यहाँ पे वो यूज किया है,
since u is a unit vector. करेक्ट है ये क्वेश्चन, बोलो। अब इसमें देखो v माइनस सी, तो v माइनस डब्ल्यू ही हो गया, ओमेगा डॉट यू कितना है, v डॉट यू है, u हो गया, ये तो वन ही है, w हो गया इज इक्वल टू v क्रॉस u। तो अब मेरे को बताओ क्या वैल्यू है इसका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस omega vector, w vector, what is the value? W vector is nothing but vector v plus v dot u to u minus v cross u by 2. Is it correct, the value of, ये correct है w का Yes, sir. वैल्यू? अच्छा, अब इसका सेकेंड एस्पेक्ट देखो क्वेश्चन का। अब क्या बोल रहा है कि भाई वो इनइक्वालिटी भी एस्टैब्लिश करना है। कौन सा इनइक्वालिटी है? u क्रॉस v डॉट ओमेगा जो है लेस देन इक्वल टू हाफ होगा, ये एस्टैब्लिश करना है। क्लियर है? ओमेगा का वैल्यू सभी को, मतलब w का वैल्यू क्लियर है, w वेक्टर। नाउ दे आर आस्किंग यू टू एस्टैब्लिश व्हाट एग्जैक्टली दे आर आस्किंग यू टू डू। दे आर आस्किंग यू टू डू कि भाई ये प्रूव करो कि u क्रॉस v का जब मैं डॉट ले रहा हूँ ओमेगा के साथ, तो ये लेस देन इक्वल टू हाफ आ रहा है। तो मैं करता हूँ u क्रॉस v का डॉट ओमेगा, ओमेगा को मैं लिखता हूँ, तो ओमेगा क्या है, ओमेगा को ठीक से लिखते हैं, ओमेगा है v प्लस v डॉट u टू वेक्टर u माइनस v क्रॉस u बाय 2 है इतना। विल इट बी एक्सप्रेशन लाइक दिस? हो जाएगा ऐसा एक्सप्रेशन, बताओ हो जाएगा ना? अच्छा आप देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, u क्रॉस b डॉट v इज 0। सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0 होगा, सिर्फ बचेगा थर्ड पार्ट। तो ये बेसिकली बन जाएगा मॉड ऑफ u क्रॉस v का स्क्वायर बाय 2। u क्रॉस v डॉट u क्रॉस v इज u क्रॉस v ओनली, माइनस भी है, मॉड है तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो इट्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 व्हिच इज मॉड u मॉड v तो 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इज एंगल बिटवीन u एंड v। तो यू थिंक दैट इट विल लेस देन इक्वल टू हाफ, तभी हाफ आएगा जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होगा। एम आई राइट? होगा लेस देन इक्वल टू हाफ, बताओ इज इट करेक्ट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट है ये? बोलो, आ गया ना एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू हाफ? नहीं आ गया? मॉड बी u और मॉड v 1 है ना, we got less than equal to half. We got the inequality, and they are saying that inequality is true when u is perpendicular to v. So that's coming when sin square theta will become 1, then it will be, the inequality will hold true, correct? The equality will hold, so it means both vector will be perpendicular at that particular point. Is it clear? Yes, sir. ठीक है। Can we go to the next page? ये clear है सभी को? This question is clear to all? Exercise 4, just see this, these two questions. Second A part, there is also vector equation, and one is fourth A. This will be the last. Just do these two questions, then we'll go to the plane and the calculative part. ये दोनों कर लो, ये भी JEE में आया हुआ। One is in Roorkee, that time it used to be IIT Roorkee was different, so both question came into the Roorkee. What do we do? Second A and fourth A.
What is the equation we are getting in second A? Anyone? You're trying second A? कर रहे हो try बोलो. Hello. So trying the question. ठीक है करो. I'll just discuss in 5 minutes. x dot y, x dot y dot z और x dot z 1 है मेरे ख्याल से. ये तीनों 1 है ना? ये है. Value is equal to 1. All 1 है given equation से बोलो. All 3 are 1 ना? Correct है. X dot y, y dot z और z dot x all are 1. Am I right? What is the first equation? From that we are getting x cross y cross z. Are we getting y minus z is equal to a? Is it the first valid equation? बोलो. Correct है बोलो. Second A we are doing. Question number second A. Is it y minus z is equal to a? What about the second equation? That is y cross. What do we get? Are we getting? ठीक है दोनों इक्वेशन बताओ. ये कुछ बोलो तो करेक्ट है दोनों इक्वेशन. Yes, sir. तो इस 1 और 2 से क्या पता चला? y minus x का वैल्यू आ रहा है मेरे ख्याल से 1 और 2 से. Are we getting y minus x by adding both? Is it a valid equation? 1 and 2 को ऐड करके we are getting y minus x. Clear? a plus b. y और x में एक और वैल्यू चाहिए. उसके लिए हमको x क्रॉस y इक्वल टू c दिया हुआ है. करेक्ट? अरे एक और इक्वेशन चाहिए ना. तो व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन? इट्स गिवन x क्रॉस y is equal to vector c. तो इसको कैसे यूज करें सर बताओ. व्हाट शुड वी डू? एंड वी गॉट व्हाट डिड वी गॉट? वी गॉट y minus x is equal to a plus b. अब कैसे सॉल्व करें इन दोनों को बताओ. What exactly we should do to get the vector x and y? बोलो क्या करना चाहिए यहाँ पे? ये बताओ तो इनसे कैसे x और y निकालें. देखो एक काम करते हैं. देखो y माइनस x को क्रॉस करो तुम इधर x क्रॉस y के साथ, उधर a प्लस b को क्रॉस कर दो c के साथ. इज इट करेक्ट? क्योंकि x प्लस y है तो अल्टीमेटली वेक्टर c है ना. सही है स्टेप बोलो.
Is it correct? Hello? Whatever I have done, is it correct? Bolo. Yes. Y minus x था कि y plus x था ये y minus x था ठीक है अब देखो now just see this what is the first term we are getting y cross now you take that y dot y vector x minus what is y dot y is it 2 कितना आ गया है what exactly we got have we got x plus y is equal to दोनों से निकल जाएगा 3 और 4 से will we get the value of x and y बोलो आ जाएगा x और y का वैल्यू 3 और 4 से करेक्ट है ये सब वैल्यूज डाल दिया y डॉट y is 2 y dot x is 1 x dot y is 1 x dot x is 2 so we get the value of x and y from 3 and 4 am I right बताओ आ Right, जाएगा sir. ठीक है चलो फाइन so this is more than enough into this just do these previous year कुछ questions हैं just try to do it देखो dot का use देखो just go to question number 7b part exercise 4 this is not vector equation this is application of dot product let's see how do we do it exercise 4 question number 7b part just have a look how do we do this So the answer is 0. 7b part no you have to prove something na, in that question where's the answer the question says what Achha, okay 7b part I said na that is like the 7a second part I think you did I'm talking about the 7b part triangle abc and Yes, triangle sir. b part I think it will be 0 correct है answer उसका हाँ a cross b bc the planes are parallel so that is correct what about 7th this b part that is a proving question
देखो, this question is, I think they're asking to, we can do it by quadrant also, but the question diagram is like this. I'll just give you the diagram, then you'll understand. You have a triangle like this, and there is another triangle. On this side, let's say we draw the perpendicular on this. On this, we are dropping the perpendicular on this. And from third side also, we are dropping the perpendicular on this. So all this line are concurrent at certain point. Correct? This is triangle A, B, C. This is D. So that we are having a concurrency. Fine. At particular point. Diagram is clear. करेक्ट है, मतलब वो ऑर्डर कुछ और दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई भी ऑर्डर मेंटेन कर लो, डजंट मैटर। तो उसी, तो अब ये बोल रहा है कि उसी ऑर्डर में जब डी से एबीसी पे करेंगे तो उसका भी कॉन्करेंसी आना चाहिए। एम आई राइट? बोलो, यही प्रूफ करना है ना क्वेश्चन में। वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। सो लेट्स से दिस इज हैपनिंग, द कॉन्करेंसी इज हैपनिंग एट पॉइंट पी, whose पोजीशन वेक्टर इज पी। ठीक है, क्लियर है? बोलो। तो आई विल टेक द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट, ए का विल टेक ए, बी का बी, C का C, D का small d, E का small e, F का small f. So what do we do for the concurrency? बताओ। Hello, 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है, तो कौन सा टूल यूज करना चाहिए? डॉट यूज करना चाहिए, क्रॉस यूज करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए? बोलो। अरे 90 डिग्री के लिए कौन सा कन्वीनियंट है? डॉट यूज कन्वीनियंट है या क्रॉस कन्वीनियंट है? 90 डिग्री है तो which one is more convenient? Hello. We'll use dot. Am I right? So this vector is perpendicular to this one. So do we have p minus b का dot with e minus b के साथ it becomes 0. Similar way, we'll get p minus a का dot with what? This is f minus e के साथ 0. And similarly, p minus c का dot with b minus f is equal to 0. Is it correct, all three equations? If you'll add up with p, since I've taken the cyclic, p into 0 will come and we'll get some constant. That constant would be minus b, e minus b minus a, f minus e, and minus c into d minus f. Is it correct? ये क्वेश्चन बताओ, करेक्ट है? The lines perpendicular है तो ये सब डॉट 0 ही आएगा, नहीं वेक्टर्स का नहीं आएगा। This is perpendicular, this vector and this vector will be 0. Same way I've assumed this perpendicular here. It means this vector and this vector is 0. Clear? Then we have assumed this as a 90 degree. It means this vector and this vector will be 0. So I've used the dot product as in 0. Clear? कुछ बोलो तो। Yes, sir. तो ये दिस इज गिवन और इसका वाइस वर्सा प्रूफ करना है, तो वाइस वर्सा प्रूफ करेंगे तो ऐसे ही विल ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम डी ऑन ए बी। तो वहां पे मानो कि ऐसा वाइस वर्सा में कॉन्करेंसी लेंगे तो वी आर ड्रॉपिंग ए परपेंडिकुलर फ्रॉम डी, जैसे डी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ऑन ए बी। ए से किस पे ड्रॉप किया हमने? ए से ड्रॉप किया हमने ई एफ पे, तो डी से ड्रॉप करेंगे बी सी पे, ठीक है। और फिर बी से हमने किस पे ड्रॉप किया? बी से हमने ड्रॉप किया, नहीं ए से हमने ड्रॉप किया ई एफ पे, सी से हमने ड्रॉप किया डी एफ पे, तो सी से
तो इसी ऑर्डर में विल ड्रॉप इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑर्डर. ये थोड़ा डायग्राम हो गया, मैंने आई हैवंट टेकन द ऑर्डर प्रॉपर्ली. तो मैं इस साइड करता हूँ. ये ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. ए से हमको उसमें बोला है ना, डायग्राम से PQR है ना, तो ऑर्डर वी हैव टू टेक दैट प्रॉपर्ली. एक मिनट रुको, आई जस्ट डू इट once more. We have a triangle ABC and then we have triangle PQR. Right, and this is your A, this is your P, this is your C, this is P, this is Q, this is R. A से किस पे ड्रॉप किया इन्होंने? QR पे. करेक्ट. A से इन्होंने QR पे ड्रॉप किया. B से इन्होंने किस पे ड्रॉप किया? RP पे. तो B से इन्होंने RP पे ड्रॉप किया. ठीक है. तो we assume B से we have drawn at RP. और C से इन्होंने PQ पे ड्रॉप किया. तो C से जो है वो PQ पे चला जाएगा स्पेस पे कहीं पे. That's not right. ये कॉन्करेंसी है एज पर द क्वेश्चन. तो इस पॉइंट को हम लोग मान रहे हैं. We are taking this point as P. इसको मान लेते हैं पॉइंट R. नहीं, R तो यूज किया इन्होंने, T ले लेते हैं इसको. इनका कॉन्करेंसी T पे गिवन है क्वेश्चन में. This is vector A, vector B, this is vector C. This is point P, इसका पोजीशन वेक्टर P है, इसका Q है, इसका R है. Now, since these two vectors are perpendicular, assuming that these two vectors are perpendicular, what do we get? P minus dot minus Q is equal to 0, right? And these two vectors we are considering perpendicular, we are getting T minus C dot Q minus P is equal to 0. And P minus P dot, we are getting so this is given. Okay, now we have to prove the vice versa. So this is given. So by adding this, T is gone. With T, we'll get 0. इसके साथ ये constant आ जाएगा. What is that constant? Minus A dot is equal to 0. We are getting this, correct? We are getting this from this, correct? So with T we are getting 0. Now we have to prove the vice versa. The vice versa में क्या होगा diagram? We have this. And we have this triangle. Now this is A, B, C. And this is R. Now from P we are dropping on BC. From P we are dropping on BC. From R to AB. And from Q to AC. From Q to AC, something like this. Correct. So we have to prove that these three also have some congruency. So अब देखो अब कैसा हो जाएगा. This is vector A, this is vector B, this is vector C, this is vector P, Q, R. We take this point as in T1. Position vector T1. मानो कि we are assuming there is a congruency. We'll prove there is a congruency rather. So this angle, since this angle is 90 degree, so what do we get? We get T1 minus Q. Correct, T1 minus Q dot with C minus A is equal to 0. Correct. Then we get
this is 90 degree, this vector T1 dot with B minus C is equal to 0. And then we get T1 minus R dot with what? A minus B is equal to. If I'm adding these two on taking the concurrency with T1 will get 0 and we'll get minus so this constant and this constant both are same. This constant and this constant both are same. So if this is equal to 0, this will be also equal to 0. Iska matlab there is a point T1 where the concurrency is happening. Clear? Vice versa is also true. ये दोनों जो आया है constant that would be equal in both the case. So we can do it by that. Correct? Is it clear? Yes, sir. This was a 10 marks question in JEE paper. Just have a look. Out of 100, 10 mark was dedicated to this. This is mains. That time it used to be screening and mains advanced, what we call it. So this is a 10 marks question in the JEE advanced, correct? So we do it by that. ठीक है. Yeah. 3D तो रह गया. I wanted to do 3D also. Vector में. How do we do this? Perpendicular to exercise 2. Just come down to exercise 2. Question number 22. Exercise 2. Just read it. Exercise 2. Question number 22. Just see this. How do we prove it? 22A part as well as B part. Means first and second part rather, not A and B. First and second part. First part, just see that if we have a plane
Okay, and there are non-coplanar points, and you take a point P on the same plane. What would be the STP of these three vectors? Anyone? So STP of these three vectors will be what? क्या होगा STP इन तीनों vectors का? What exactly the STP of these three vectors will have? 0? Can I say that P minus A, P minus B, and P minus C STP will be 0? Am I right? Because all the three vectors are coplanar. Can I say that? Yes, sir. So STP is 0. So we'll just do the STP. What is the STP? P minus A. We'll take the dot, and then we'll take cross of these two. What do we get from this? First part is P minus A. P cross P is gone. We get minus P cross C plus P cross C, is it? Not take dot with P. By taking dot with P, these two will be gone. Will be left out with what? STP of PBC. If I take dot with A, so it becomes plus APC, and dot with A plus ABP, and dot with that is plus minus ABC. Correct? So what is that we are getting? We are getting STP of ABC is equal to, I think आ गया given expression नहीं आ गया, तो order change करना पड़ेगा. Is it the first part? I just need to change the order. Is it the first part? 22 first part we have to prove. Bolo. Have we got it? Clear? We just, it's given P PBC is matching. It's given PAB. So PAPB, PAB, or ABP. It's the same thing. So we can write on this as in PAB. This will be PAC. PCA. These two are the same. So we can replace this and this. So it's matching to the first part. Correct? ठीक है चलो थोड़ा बहुत क्वाइट हो गया एकदम क्या कैन वी कंटिन्यू और लाइक यू वांट टू लॉग ऑफ बोलो आई डोंट माइंड टीचिंग फॉर अनदर हाफ एन आवर बोलो शैल वी गो अहेड हेलो सर थोड़ा और कर सकते थोड़ा और कर सकते हैं तो ये मैच कर गया ना फर्स्ट पार्ट बोलो क्लियर है यस हाँ सेकंड पार्ट पे आओ तो देखो सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है इसको समझना ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है वेक्टर में सारा चीज वही 7 टूल से आता है इफ यू अंडरस्टैंड दिस देखो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई एक प्लेन है ठीक है तो इस प्लेन पे 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं ए है बी है और सी है ठीक है और क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में हाँ बोला ओ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो इसको एक काम करते हैं ऑरिजिन को लोकेट मानो ऑरिजिन यहाँ पे कहीं पे है ऑरिजिन है कहीं पे रुको एक मिनट में दूसरा डायग्राम ऐसे समझो ऑरिजिन है ठीक है और एबीसी से एक प्लेन है ए है बी है सी है अच्छा बोला ऑरिजिन से एक हम वो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ऐसे मेरे को इसका डिस्टेंस चाहिए इस प्लेन पे ओडी का डिस्टेंस चाहिए क्लियर है डायग्राम क्लियर है बोलो इज इट क्लियर यस
अच्छा मेरे को ये बताओ वेक्टर ओडी का डायरेक्शन किसके लॉन्ग होगा? इफ आई टॉकिंग अबाउट दिस या रादर ये डायरेक्शन की बात करें, ये किस वेक्टर के लॉन्ग होगा? तो इस पे कोई भी दो वेक्टर ले लो along the plane. We have b minus a, नहीं sorry, a minus b, and this is c minus b. So do you think that the direction of OD will be along a minus b क्रॉस c minus b? हो जाएगा? बोलो। अरे प्लेन पे कोई भी दो वेक्टर ले लो, उसका क्रॉस लोगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर ही आता है ना? बोलो। Yes, sir. इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूं, व्हाट डू वी गेट? वी गेट, आई थिंक ये आ जाएगा ऐसा, a क्रॉस c माइनस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस c। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स अलोंग a क्रॉस b। नेगेटिव है आगे तो डायरेक्शन इसी का होता है ना। कैन वी राइट डाउन लाइक दिस प्लस c क्रॉस a? नहीं लिख सकते हैं a क्रॉस c को माइनस c क्रॉस a कर दिया। विल इट बी अलोंग a क्रॉस b प्लस c क्रॉस a? दिस OD वेक्टर is along this. Can I say that? बोलो। बोल सकते हैं OD वेक्टर is along this. Clear? Yes, sir. अच्छा OD डिस्टेंस की यदि मैं बात करूं, यदि मैं OD डिस्टेंस की बात करूं तो OD डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस OD is nothing, distance OD is nothing, projection of vector A along vector OD, करेक्ट? इस वेक्टर का इसके along प्रोजेक्शन ले लो, वही है ना डिस्टेंस OD? नहीं है, कोई भी A का B का C का किसी का भी उसके along प्रोजेक्शन ले लो, वही है ना डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सही है एक्सप्रेशन? बोलो। Yes, sir. अच्छा A का B के along प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? A का यदि B के along प्रोजेक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है A डॉट B अपॉन मॉड B। B ये वेक्टर है यहाँ पे, दिस इज योर B वेक्टर, मतलब जिस B को हम वहां पर रेफर कर रहे हैं, तो हमको A का प्रोजेक्शन चाहिए along दिस वेक्टर। तो देखो मैं लिख रहा हूँ उसको, तो मैं क्या करूंगा, A डॉट A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A कर दिया, और नीचे मॉड B करेंगे तो बाय मॉड ऑफ क्या आ जाएगा? आ जाएगा ये A डॉट, इज इट OD डिस्टेंस? बोलो, इज इट OD डिस्टेंस? A डॉट B बाय मॉड B कर दिया, करेक्ट ना? दिस इज योर वेक्टर B, करेक्ट है? बोलो। Yes, sir. ऐसा करने से ऊपर में क्या आ जाएगा? ये दोनों तो जीरो ही हो जाएगा, STP ऑफ ABC। अच्छा इसको ध्यान से देखोगे तो ये बेस वाले ट्रायंगल का 2 टाइम्स एरिया है। अभी क्या था ना, पोजीशन वेक्टर्स होता है ABC, तो उसका एरिया आता है A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, तो 2 टाइम्स एरिया है बेस ट्रायंगल का। तो ये हो गया OD का वैल्यू। किसी ट्रायंगल का पोजीशन वेक्टर्स ABC है तो उसका एरिया होता है हाफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। वी डिड दैट फॉर्मूला, नहीं होता है, अभी करा था वो प्रीवियस में, तो उससे 2 टाइम्स एरिया लिख दिया। इज इट द डिस्टेंस OD? एम आई राइट? Yes, sir. अच्छा OD को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस? यूनिट वेक्टर अलोंग दिस इज व्हाट? A क्रॉस B, this is becoming equal to ABC का STP by 2 times delta. To get the OD vector, we'll multiply this by what? A cross B, B cross C, C cross A, और इसका मॉड फिर से 2 डेल्टा हो जाएगा। तो आ गया जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है OD वेक्टर का। इज इट मैचिंग? डिस्टेंस को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, we got the OD vector. Is it matching to the given expression? Just see that. कर रहा है मैच? STP of ABC upon A cross B plus B cross A. Is it clear? डिस्टेंस को यूनिट वेक्टर तो यही होगा ना, इस लाइन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला Let be A cross B plus B cross C plus C cross A. इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा होता है, तो इसी से मल्टीप्लाई करना है इसको, करेक्ट? Yes, sir. So we got the expression from this. Is it clear? तो
वेक्टर्स में कहीं फॉर्मूला नहीं है. इफ यू डॉट क्रॉस स्केलर ट्रिपल, वेक्टर ट्रिपल एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन इन ए स्पेस क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस उसी से क्रैक हो जाते हैं. कोई फॉर्मूला की कहीं जरूरत ही नहीं है. डिड वी यूज एनी फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन? जस्ट saw what is the required and we just did that by using that. Correct? Yes, sir. चलो ठीक है, अब करो प्रैक्टिस. ठीक है, वेरी लेस पीपल लेफ्ट. फाइन, सो यू कैन डू इट. ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है जेई और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जस्ट तो थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir. क्लियर? थैंक यू.